to the video. Today we are going to discuss how to set up Django in Visual Studio Code. Okay, so इसके लिए some prerequisites are there. पहला है Python extension. ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ. Python का वर्जन भी लेटेस्ट मेरे पास है. ये विंडोज़ के लिए सेटअप है. Okay, and then what that saying to create a folder. Okay, so मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने फोल्डर पाइथन टेस्ट के नाम से क्रिएट कर लिया है. ओके, नॉर्मल है जैसे आप नया फोल्डर बनाते हैं और उसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लीजिए. ओके, नाउ दे आर सेइंग टू सेटअप एनवायरनमेंट. सो मैं एनवायरनमेंट सेटअप करने जा रहा हूँ. Okay, now environment is done. Now what they are saying? They are saying अब्बा डब्बा जब्बा. ये सबको इग्नोर कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. इतना आपको आता ही है. ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है. Now the part is this one. Okay, ये आपको करना है. So what need to do? मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ. बस मैं आपको दिखा देता हूँ how it will work. ठीक है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड मीन्स ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल्ड है. ओके, सो आपको ओवरराइट करना तो फोर्स के कर सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. नाउ क्रिएट अ रन एंड मिनिमल Django ऐप. ओके, सो नाउ दे आर सेइंग, ठीक है, इन द विजुअल स्टूडियो कोड टर्मिनल वेयर योर वर्चुअल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड फॉलोइंग कमांड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू नेविगेट टू एनवायरनमेंट. ओके, यहाँ आने के बाद run this command Django. Okay, so now you can see web project is created. Okay, with the whatever required files are there, everything is created, settings, URLs. Now this is a structured and explained, you can see here. Okay, now need to migrate database as well. The default database in Django is SQLite. Okay, so run this command using Python 3. I have both Python 3 also and Python 2.7 also. So now you can see the SQLite is installed. Okay, now simple thing, need to run this command. Okay, by default the application is running on 8000 port. You can change, it's up to you. So if I am running only this, okay, if I am running this command only, it will run on default port. See, okay, this is the page of Django. Okay, install work successfully. And if you want to change port, close this server and then you can change port whatever you want to do. Okay, let's see. Now if I open this, it will work. Okay, this way you can install Django, you can set up Django in your Visual Studio Code. The same thing will work in Windows also, almost same only. Okay, in Windows if you are not creating environment also it will work. Okay, thank you for watching this video. For any doubt you can ask me in comment section. Thanks.